So we are into lecture 7. ठीक है, ये आपको नजर आ रही है ये वाली स्क्रीन? हाँ जी सर। ठीक है, okay. So let's begin our lecture. If you remember this curve, we had one example. So you need to know how to read a stress strain curve which has been obtained from measurements. So you know that universal testing, that testing machine, yeah? Material testing machine, if you remember, yeah? Material testing machine. So you will get something like that. So in this example, it was easy to spot the yield strength. This is called yield strength, yeah? Or you can also call it yield stress. Why it was easy? Because after this point, the slope changes, yeah? So you can see a sharp change of slope, and you say that the material yields, which means, you know, what do you mean by yielding mathematically is that you need only little stress because the slope is low. You only need little stress to have more strain, yeah? So it takes less effort to deform the material, and that is what you mean by yielding. But this will not always be so straightforward. So for example, in this case, what will be the yield stress? Sy. If I ask you, it is? Tell me. Yield stress is 54 KSI. KSI means kilopounds per square inch. But are you hearing me? Yes sir, yes sir. Yeah, because this was a very straightforward question, so I expected somebody to answer that. Yeah. Now the next example will show you that it's not so straightforward. Although you see the value, yeah, because it has been labeled, but you don't know how we got with that value, yeah. So, and the problem, if you can see, is that we cannot see that sharp change of slope. Yeah, the change of slope, the slope is changing, but it is changing so smoothly that you cannot find that point. Yeah, ये तो वैसे आगे भी जा रहा है, तो आप कैसे? तो when you cannot see that sharp corner just like before, yeah, then there is a method called the 0.2 offset method. This is a method for determining yield strength, yeah, or yield stress. Now I'll not discuss the calculation of the elastic modulus because that you know already, yeah. That for that you only need to look at the linear proportional region, yeah. Okay, so what you do is that if you spot the range where the curve is linear, you find that slope, and then you draw the same slope, a line of the same slope, but not at the origin. Remember, make sure that this is in percent, yeah. So, and then just go 0.2%, yeah, 0.2%, yeah. And at that point, you draw a line of the same slope. Okay? You know, from signals and systems, and even from calculus, you know how to draw a line. Yeah. So let's say if you have a line of this slope, I want you to draw this line of the same slope at a different point and make it 0.2 offset, yeah, to the right. ये बात समझ आ रही है आपको कि how to draw this line? Yes sir. Okay, so once you have this line, all you need to do is to
find the intersection with the stress strain curve, and that is so easy. And there you get it. It's 22 point. You cannot even read it. 22 ksi. 22 ksi. So you have to remember this method, yeah, when you cannot spot the sharp corner. If you can spot a sharp corner, you locate the point where the slope actually it's wrong to say the slope changes, because the slope is always changing. If you can recall some of your calculus, yeah, this is also nonlinear. This is also nonlinear. At this point, what happens is that the curvature changes. What? And the curvature is represented by the double derivative. Yeah, slope is the single derivative, and the curvature is determined by double derivative. So you will see that the double derivative changes. Here, even the double derivative doesn't change, and that's why you need this method of offset. ये बात समझ आ गई? इसके अलावा Yes, कोई sir. फर्क नहीं है इसमें. So the next slide is about material property data. So you need to develop some understanding of appreciating these different properties. So in this column, I have different types of materials. Yeah? Aluminum alloys, copper alloys, steel alloys, and you know what is meant by alloy. Yeah, you mix the metal with some other things to have some nice properties. Yeah. So as one example, you know copper. Yeah, copper is a good conductor. Yeah, for electricity. But if you use pure copper, what are the possible problems? Let's say this is a copper wire, pure copper. Can you tell me what are the problems with that? Sir, heat losses, शायद. नहीं, heat losses तो resistance उसकी कम है ना. When I say it's a good conductor, it has a small resistance. Yeah? Yes, sir. So, but still you have problems. It has some it can corrode. You know corrosion. Yes, sir. So it has, I mean, pure copper is not acceptable. So you have to mix it with, let's say, zinc or some other material, I don't know. And that's what you mean by copper alloys. Similarly, aluminum alloys. Aluminum has some nice properties. So I'll give you an assignment where you have to read that part of the book to understand why these alloys are actually uh, prepared in the industry. But this is not the point of discussion today. Today, I want to tell you how to characterize the properties that are relevant to this course. So, for example, you know elastic modulus is a nice property, yeah? Elastic modulus, E. So you have two units, mega psi and gigapascal. So you can see these values, yeah? Similarly, you have a column for Poisson ratio. It tells you, okay, how the diameter changes, yeah, when you try to stretch or shrink a wire or a member of that material. Similarly, weight density, it's also important. Why it's called weight density? Normally, you are familiar with mass density, yeah? So it's not mass per unit volume, but it's weight per unit volume, yeah? Pound per cubic feet, kilonewton per cubic meter. It's relevant in this course because what matters is the loading. So loads are characterized by weights, forces, not kilograms. So can you now tell me from this table, like for example, if you have a choice of these materials, which one would you choose for a particular, and how do you decide that? For example, if I ask you which material would you choose? Sir, what material will we choose for? What will be our? Let's say there is no limitation of cost. Okay, cost is never a Mm, problem. yes, sir. But sir, what are we choosing it for? We are choosing it for an application where it has to withstand load. Yeah, you do not want to fail, or those circumstances. Think in terms of stress But strain. the Yeah. one with the minimum resistance? No, but there is no resistance here. Yeah, I gave you that example of resistance only to appreciate why we need alloys. Forget about resistance now. The properties in this table, yeah,
are the properties in this table are related to the behavior of a Sir, material depends under elastic loads when you are modulus. stressing it. Yeah. Sir, it depends on elastic modulus. If it's greater, then we won't use it, So, and for if example, it's if I keep it simple, let's say I have to choose between aluminum Sir, I would alloy and let's say steel steel alloy. Which one is better in terms of strength? steel alloy, sir. Steel alloy, sir. The steel alloy is better. Okay. Now, how about this one? This property, if you compare these two properties, its weight Yes, sir. density. It's it's still Steel would be, sir, a little bit heavier, but at the same time, it will be able to carry a lot more load. Yeah, the problem with steel will be is that you will need more weight, yeah, for the same volume. So if you want to have a compact um, piece of hardware, you would go for aluminum. Yeah. No, sorry, you will go for steel. I said the opposite. Yeah. So even here, even in this case, it is better. Yeah? No, let me just phrase it. Weight density. It has more weight. Yeah. Yes, sir, So it will so be so so heavier. so so if sorry, if cost, actually what I had in mind was the cost. If cost was a problem, cost translates to mass. Yeah. Yes, sir. So if you need more mass, and let's say they are both equally available, so you will need more mass. So it means that this elastic modulus is not the only thing to consider. You have to consider it together with the weight Weight density. density. And maybe a decision should be based on some ratio of the two. So for example, you can think about this ratio, yeah, or if you think about this ratio, which ratio will be more appropriate for an application? Tell me. Think about this ratio now. You need more strength, yeah, and less weight. This factor will be large, yeah, when the numerator is large, agreed, yes, Yes, sir. sir. and the denominator is Smaller. small. So rather than looking at E and rho separately, if you look at this ratio, if this ratio is large, you have both properties are actually, you have a desired combination. So इस तरह के cases में you know how to combine different properties. Okay. Similarly, some other properties which you can have in mind are the ultimate strength and yield strength. Although ultimate strength indicates the actual failure, yeah, but yield strength gives you an early warning. समझ आ गई ना बात? इन दोनों में ये फर्क है. Yield strength अगर Yes. आपको नजर आ गया, आपको पता चल गया कि इसके बाद यार ये जो है ना, ये it's practically useless. It's practically useless. That actually brings me to another interesting discussion. Let's go to this. No, sorry. Actually, I can go to this. So let's say I have this material, yeah, with this curve, and I have another material. If you look at this, actually we don't see that point. So maybe I have to look for the other. The ultimate strength point, sir. No, actually I want to discuss this. Yeah, well maybe we discuss this some other time. Yeah.
So maybe I discuss this here. Okay, let's, you know, in the stress strain curve, you have this elastic range, yeah, and you have this plastic range, yeah. Agreed? Elastic region and plastic region. And Yes, sir. let's say after this you have that failure, yeah. Okay. After the plastic region, sir. No, plastic region, yeah, plastic region is Is just before. This whole region is called plastic, yeah. Plastic इसलिए कि yes, परमानेंट डैमेज है ना, तो फेलियर भी तो परमानेंट डैमेज होता है ना. yes, प्लास्टिक का मतलब यह है कि वो रिस्टोर नहीं होगा ना, तो खत्म फेल हो भी गया इसी में शामिल है. बात समझ आ गई ये बात? ये, बिल्कुल सर. अच्छा, लेट से आपके पास दो टाइप के मटेरियल है. एक मटेरियल ऐसा है कि जिसका ये प्लास्टिक रीजन जो है ना बहुत शॉर्ट होता है. ठीक है, ये लेट से उनका ज्यादा है, लेट से उनका ये ज्यादा है, ठीक है, और ये प्लास्टिक उनका क्या है, शॉर्ट है. और कुछ केस में प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होता है बिफोर इट फेल्स, ये जो. तो इन दोनों में क्या फर्क है? इनमें से ये जो शॉर्ट है ना, ये आपको कम वार्निंग नहीं देगा. ये सडनली जो है ना, even if it appears to be strong का मतलब यह है कि E उसका लार्ज है, ठीक है. What I'm trying to say is that E is not the only thing to look at. Even if you have a large E, if this region is short, what will happen? That material will just fail or break without any warning, इसके कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है ऐसे मटेरियल की? स्प्रिंग सर, कोयल स्प्रिंग. कॉइल स्प्रिंग नहीं, लेकिन स्प्रिंग तो आपको पता है, स्प्रिंग का तो ये भी ज्यादा होता है ना. लेट्स से इसका ये भी शॉर्ट है, ठीक है ना. मैं आई एम नाउ इमेजिनिंग ए कर्व लाइक दैट, या कि ये बहुत शॉर्ट है और ये ऐसे है, which means that you need a large stress, yeah. और ये उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है ना. तो ये दोनों इसके शॉर्ट हो गए ना, ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया. बट बिकॉज द स्लोप इज लार्ज, लार्ज स्लोप का क्या मतलब है? लार्ज स्लोप का मतलब ये है कि ये दिस विल अपीयर टू बी स्ट्रांग, या. आप फोर्स लगाएंगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्सीड करेंगे फोर्स को, तो क्योंकि वो डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है. बेहतरीन एग्जांपल इसकी ग्लास है. पॉलीथीन सर कह सकते हैं इसमें? नहीं, ग्लास, आप, मुझे केमिस्ट्री का ज्यादा नहीं पता, लेकिन ग्लास के बारे में कम से कम मुझे पता है कि ग्लास को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब होगा वो अचानक होगा. डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल सर. ठीक है ना. तो ऐसे नहीं, मटेरियल्स वो भी तो पहले क्रैक करता है. नहीं, लेकिन वो क्रैक से पहले, मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग ग्लास की बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे साथ हो चुका है किचन में. वो फाइबर ग्लास लगा हुआ था कुकिंग रेंज में, और अचानक जो है ना वो इट जस्ट ब्रोक इनटू पीसेस, और उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था. इसको बेसिकली इसको कहते हैं ब्रिटल, क्या? ब्रिटल. सो स्ट्रॉन्ग इज एक्चुअली नॉट इनफ और स्टिफ इज नॉट इनफ. या इसका जो अपोजिट है वो है स्टिफ एंड सॉफ्ट. सर डक्टाइल कह सकते हैं इसको? डक्टाइल, एक्चुअली दैट्स द राइट वर्ड, दैट्स द राइट वर्ड. स्टिफ तो सिर्फ ई की वैल्यू के मुताबिक होता है ना. लार्ज वैल्यू मींस स्टिफ, मोर स्टिफ. स्मॉल वैल्यू मींस लेस स्टिफ. जो ब्रिटल का अपोजिट है वो डक्टाइल है. डक्टाइल का मतलब ये है कि इट कैन विथस्टैंड लार्ज डिफॉर्मेशंस.
So it has a wide plastic range. It has a, तो डक्टिलिटी की दो एडवांटेजेस हैं. एक तो आपको ये अर्ली वार्निंग देगा, दूसरा क्या एडवांटेज है बताएं. सर वो टूटेगा नहीं और वो डिफॉर्म हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, और इट इज लाइटर एज वेल. सो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है डे टू डे लाइफ में? यू कैन मेक डिफरेंट शेप्स फ्रॉम दैट. आप कुछ मटेरियल से तरह तरह की चीजें बना सकते हैं. जिस तरह एल्यूमिनियम है, आप उससे ग्लास बना लें, आप उससे कोई भी चीज बना सकते हैं, वो टूटेगा नहीं. ठीक है ना. टूल्स को, विद टूल्स यू कैन शेप देम इनटू मेनी थिंग्स. एंड दी, और रबर की तरह नहीं है. रबर उस तरह नहीं है. रबर इज टू सॉफ्ट. रबर चूंकि इलास्टिक बहुत ज्यादा है ना, इलास्टिक रेंज उसका, तो रबर से आप चीज बना नहीं सकते इतने आराम से. लेकिन एल्यूमिनियम से या डक्टाइल, सो डक्टाइल एंड ब्रिटल दे आर ऑपोजिट. ओके, so let's get into some examples. And one more thing about these tables is to note this thing. Okay, these values are representative values, they are nominal values. आपने nominal value नाम सुना है? Nominal, जिस तरह आप जब आप रजिस्टर देखते हैं ना लैब में, उस पे जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? वो नॉमिनल वैल्यू होती है. इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंट रजिस्टर्स आपको मिलेंगे उनमें वेरिएशन होगी. ठीक है, इसलिए वहां पे टॉलरेंस आपने कहा, वहां पे क्या आप रिपोर्ट करते हैं? टॉलरेंस. तो यहां पे भी है कि ये जो वैल्यूज आपको मिलेंगी ये हमेशा हर दफा ये नहीं होंगी, देयर विल बी वेरिएशन. ठीक है, लेकिन ये इसी के अराउंड आसपास होंगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. एंड सेम विद दिस. Okay, so let's now have our first example. Let me read this. So we have, for the 10 millimeter diameter steel U bolt in example 5.2, we had dealt with this U bolt. Yeah, हमें इसका diameter भी पता था. diameter कितना था इसका? Someone remembers? 10 millimeters. 10 millimeter. Yeah, इसको यहाँ पे देना चाहिए था ऐसे. So what we need to find is the strain. Yeah, then we need to find the change in length, which means the deformation, and or you can also call it elongation. And we also need to find the change in diameter. और length उस example में नहीं था, यहाँ पे length given है. ठीक है, लेकिन आपने एक चीज बड़ी गौर से देखनी है कि the question is about that 325 millimeter long straight section. So the question is only about this part. Okay, not about the whole of the bolt, क्योंकि बोल्ट की लेंथ ज्यादा हो जाएगी ना, 325 plus 325 plus this length. So you need to read this question carefully, that we are only concerned with this part. समझ आ गई ये बात? Okay, use the rule of thumb value for the elastic modulus. Yeah? Elastic modulus आप ये यूज कर लें. ठीक है, it looks like ये उसका ही है, स्टील का ही है. And take Poisson's ratio as 0.3. Can somebody guess why we need Poisson ratio in this example? Which part will require that? सर वेट डेंसिटी इन उसके लिए. No, density तो यहाँ पे है ही नहीं. सर Poisson एक्सपैंड और इसलिए नहीं, Poisson ratio की जरूरत हमें कब पड़ती है? Poisson contraction याद है आपको? When we want to know how something, how the diameter changes when you try to stretch or contract something. आप इसको जब stretch करेंगे इस direction में, तो I told you that the diameter will decrease. Yeah, change. ठीक है ना. So अब part C में हमें चाहिए ना basically. You cannot solve part C without that. समझ आ गई? Okay, so how do we go about the first part A? In part A, we need to find strain.
So what is strain? Strain को हम ऐसे लिखते हैं, या अब स्ट्रेटेजी बनाएं कि स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है आपका, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, रेशो को. सो यू नो दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में कौन सा अननोन है? एक ये Stress. अननोन है ना, Strain. ये गिवन है, ठीक है. And this is something which is not known, but you can work it out. Yeah. So one thing is that I need to work out stress first. So what is stress? अच्छा 10 मिलीमीटर, सॉरी इसमें दिया हुआ है, मेरा ख्याल तक नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है. उस एग्जाम्पल में और क्या था जो हमें याद नहीं आ रहा? I think we need to read that example कि उसमें stress कितना था. I think we calculated the stress there. I don't like such examples when you have to go and read that. Okay, so let me just find out. It was 5 point. ये था ना? It was this one, yeah. This one. Example 5.2. 5.2 क्या है? Example 5.2, this one. So if you remember, we calculated the stress there, and that was 50.93 megapascal. ठीक है? So we know that 50.93 megapascal. 50.93 megapascals. Okay. So now we just need to solve this equation. Sigma divided by E. You know sigma and you know E. 210 gigapascal. Megapascal, gigapascal. I think by now you should know how to deal with mega and giga. Okay, ये आप कर लेंगे ना, ठीक है. यहाँ पे आप किसी ऐसे रेशो से मल्टीप्लाई करें जिसमें you can get rid of pascal and mega and giga. आपको पता है कि उसके साथ क्या करना है. So that will give you the strain. ठीक हो गया ये? So we now know the strain. So now I am assuming that I know the strain. Okay, I don't want to write the values. Strain मुझे पता चल गया है, मुझे E भी पता चल गया है, मुझे स्ट्रेस भी पता था पिछले एग्जांपल से. Now part B requires me to find the change in length. Change in length का क्या तरीका, क्या करना पड़ेगा मुझे? For that I need to strain की definition मुझे पता है ना, क्या है? delta L over L. So इसमें मुझे strain भी पता चल गया, L मुझे ऑलरेडी पता है ये. So this will give me delta L. Yeah. Now part C requires to know to use the Poisson ratio. Poisson ratio आपको याद था, उसका क्या definition था, if you remember? It was minus delta D over T divided by delta L over it was actually the strain, yeah. और strain की तरह, strain तो ये ratio है length के लिए. Something similar for diameter will be delta D over D, yeah.
Yes, sir. And because we know when delta L is positive, delta D will be negative, we don't want to see a negative answer. So that minus sign was actually there. That's why it was called Poisson contraction. So इसका मतलब ये है कि from this example I can work out delta D to be what? Minus V epsilon times D. D, क्योंकि डिनोमिनेटर में है. And the answer will be negative. Negative का क्या मतलब है? क्योंकि normally delta क्या represent करता है? Delta represent an increase, yeah? And when the answer is negative, it means that it has contracted. And that's what you expect. अच्छा, इसमें जो values है ना वो interesting है. मैं वो value लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है. Because just solving the problem is not the only thing you need to do. You know this, the SMART methodology. RT क्या था SMART में? It was, RT was, remember, reflect and so let's look at these values now. Yeah, I'm now zooming in. And it's reasonable to write the answer in units that are simple. So rather than 10 to the power to minus 6, you just write micrometer. Micrometer, can you think about this length, how small this will be? Can you compare it with something you know? A hair, sir. बिल्कुल उसी तरह के हेयर का भी इतना ही होगा ना. And this is even smaller, yeah, nanometer. ठीक है, तो आपके ख्याल में ये इतना, और लोड कितना है? लोड आपको याद है उस एग्जांपल में कितना था? It was 4 kilonewton, yeah, which means 4,000 newtons, sir. yeah, so 900 pounds. It's a huge load. In spite of that, और लेंथ उसकी कितनी थी? लेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी उसकी. लेंथ कितनी थी? 325 मिलीमीटर. इतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है ये, समझ आ गया? It's less than a 325 millimeter. So it's roughly 32 centimeter, yeah. So you can imagine it's not very large. और ये 10 millimeter कितनी है? ये 10 millimeter is a very small diameter, yeah. Sir, almost the size of a bullet. हाँ, तो 325 मिलीमीटर में ये जो लेंथ चेंज है ये इतना कम क्यों है आपके ख्याल में? How can you explain that? Sir, because इसका elastic modulus is quite modulus. large. Yeah, बिल्कुल elastic. So it means that the material जो है ना material आप यूज कर रहे हैं, it is suitable, ठीक है, for this application. क्योंकि यहाँ पे हमें वो मटेरियल नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा जो है ना सॉफ्ट हो. So I would like you to read these comments at the end of each example, even if I forget to explain. So now the next example is 5.4, again from that same book, Wickard and Lewis. In this example, you are given a rod, so you have a round rod, yeah, which is made of steel alloy, having stress strain characteristics shown in 5.12. वो मैंने स्टार्ट में जो आपको दिखाया था वही उसी की बात हो रही है, ठीक है. When it is subjected to 3,500 pound of tension, 3,500 pound of tension, calculate the stress and strain in the rod. ठीक है.
So you know the length, you know the diameter, yeah? You know the load, and you want to work out the stress and strain. So part A में you are supposed to calculate the stress. Stress क्या होगा? So tension over area. तो आपके पास यहाँ पे टेंसाइल लोड है T और यहाँ पे एरिया हो गया, and you know how to calculate area from this diameter, ठीक है? So you know area, you know tension, you just calculate this. So that is something which you will find out. Now the next thing is strain, yeah? Strain आप कैसे calculate करेंगे? For that you can work out this thing, yeah? Change in L over L. No, लेकिन you need to find the strain. The change in वो तो पार्ट बी है ना जो आपको बता रहे हैं, पार्ट बी का Yes, sir. पार्ट ए में यू आर सपोज टू कैलकुलेट द स्ट्रेन. सो स्ट्रेन अब डेल्टा एल तो आप उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ना. Just because strain is delta L over L doesn't mean that you can calculate it this way, क्योंकि you don't know this, yeah? Yes, sir. तो आप strain के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? क्योंकि आपको मटेरियल पता है ना. So stress into area divided by. जब मटेरियल पता हो तो इसका मतलब ये है कि you are supposed to know this value. ठीक है ना. उस एग्जांपल में ये इसने 5.12 की बात क्यों की थी, याद है आपको? लेट्स गो टू 5.12, या 5.12 किधर है? ये 5.12 है ना. इसमें आपको इस डेटा से क्या मिल रहा है? कैन यू फाइंड आउट E? यू कैन वर्क आउट E, या E विल बी 46 divided by, याद है? We worked this out, yeah? E is the slope of this line, yeah? Is the slope of this line. Luckily, we even have some highlight here, yeah? So, sorry. Okay. It will be this length, yeah, which is 46 ksi divided by this length, which is 0.1 times 0.15 times 0.01, yeah, because of the percentage. So from this you will calculate E. समझ आ गई बात? So you know E now. I'm going back to that slide now. When you know E, I'm just ticking it. You know E is stress divided by strain. So you can now solve this for strain because you know stress and you know the modulus. So E is also known. समझ आ गई ये बात? Now in part B you will use the other definition, which is delta L over L, क्योंकि यहाँ पे आपको the amount it stretches. So you want to know delta L, which is L times the strain. You have strain from part A and you have length given in the diagram. So you work out the amount it stretches, yeah, delta L. Now C में क्या है? The change in diameter. Change in diameter के लिए क्या चाहिए आपको? Again, the Poisson ratio. Poisson ratio, you always can work it out. You have in the denominator the strain, and in the numerator you have something like strain for diameter, which is delta D over D. This is, and this means you can work out D, delta D minus V. You don't need to memorize it. You can always work it out. Okay,
पार्ट डी में क्या है? Can somebody tell me what is stiffness? It is the ratio of देखा ना, जिस तरह ये जो था elastic modulus is stress over strain, yeah. So if you remember this K, which we call the stiffness, it was load. So in this case, load will be T, yeah, divided by deformation, remember? So you replace stress with load and you replace strain with deformation. So K is simply equal to T over delta L. You know T, which is 3,500 pounds, and you worked out delta L from part, which part? From part B, yeah? You know this from part B. So you will know K, yeah? So can you now tell me how to solve part E? Part E में क्या है? Let me clear this so that you know what we are doing. So remove all annotation, and now I am assuming, okay, that from part A we know stress and strain. From part B we know delta L. From part C you know delta D. From part D you know K. And now you need to combine all these four parts or some of the parts to find the quantity in E, and that is if the force, so now you change T, you have a new T, yeah, which is 1,000 pounds, yeah. Instead of this T, you have another T. By what amount the rod would have stretched? So now you want to find that new delta L, not this one, but the new one corresponding to this load. Yeah? क्या तरीका है आपके ख्याल में? से हम स्ट्रेस जुबान निकालेंगे और स्ट्रेस के बाद फिर हम स्ट्रेन निकाल लेंगे. नहीं तो ये फिर इतने सारे पार्ट्स करने का क्या फायदा हुआ? It will involve so much work, yeah? Yes, sir. So आपको मैंने अभी K की डेफिनेशन बता दी, क्या क्या था? ये था या नहीं था? Yes, sir. तो जब हम T को चेंज करेंगे, बजाय 3500 के हम उसको क्या कर लेते हैं? 1000 LP. So delta L will also change. Delta L will simply be K divided by T. No, T divided by K, sorry. क्या? T divided by K. Yeah, so you just work it out like that. ठीक है? So आप ये वो strategy वाला part है ना कि if you have worked out something, you should try to use that rather than reworking everything from scratch. ठीक है? Now, so far we were concerned only with two types of stresses, the tensile stress and the compressive stress. और मैंने दोनों का नाम भी बताया था आपको. दोनों को क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस, या नॉर्मल इसको इसलिए कहते हैं कि जिस एरिया के ऊपर ये स्ट्रेसेस stress is a consequence of these distributed forces. तो वो जिस एरिया की बात हो रही है वो सारे फोर्सेस उस एरिया को नॉर्मल होते हैं ना, नॉर्मल टू द प्लेन. बाय प्लेन वी मीन द प्लेन इन विच यू हैव द योर रीजन और एरिया जो भी है. ठीक है? Now we also told you that there are situations
where it is more important to know the another kind of stress which is called shear stress. Okay. So if you focus now on the left hand side, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि you have this support, rigid support, this rigid support. On top of this you have another body, और ये आपको जॉइंट नजर आ रहा है. जॉइंट, दो जॉइंट्स है आपके यहाँ पे. जॉइंट्स तो आपको नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्टैक्ट एक ये वाला है, ये वाला, ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट ये वाला भी है. नजर आ रहा है आपको ये? ऑल्दो इसको कॉन्टैक्ट कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना. इफ यू थिंक अबाउट दिस पार्ट, इसमें इसका ये जो पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, इसके दरमियान ये जो रीजन है, इवन इफ देयर इज नो जॉइंट, it is possible for these two to slide past one another. क्यों? क्योंकि जब आप ये लोड आप ऊपर से इस पे लगाते हैं, you are let's say pressing it from above, so this part of the body will tend to go down and this part will not be able to go down because this has been supported. ये बात समझ आ रही है? इसके लिए तो जगह है ना जाने की, इसके लिए नहीं है. तो क्या होगा कि ये जो shear plane है, इसको shear plane कहते हैं, इसको ना असल में आइसोलेट किया हुआ यहाँ पे ना. ये जो एरिया है ना, parallel to that area you will have this opposing force, ये जो from the support, जो जिस तरह हम कहते हैं reactive force है. So do you agree with me that we have three external forces? One applied force. I am now focusing on only this part, a free body. I have now free body of that part. So this is applied force and these two are reactive forces. ये दो क्यों हैं? कोई बता सकता है? Because there are two such overlaps. Yeah? So both of these, and now static balance requires that, and if you have force balance along the y-axis, these two must be equal to F. So that's why F must equal 2 times V and V must equal half of F. Okay? And this is just to emphasize that shear stress is also a consequence of these many forces. So अब इसमें ये जो reactive force है, basically ये internal force है, मैंने पहले भी बताया था, internal force, क्योंकि ये external है. अच्छा, ये मैं इसको external यहाँ पे कह रहा था when I had this as my free body, लेकिन चूंकि ये तो पूरी बॉडी तो ये है ना, ठीक है ना, ये तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट के लिए इसको अलग किया था. तो if this is your system, then that is an internal force. ठीक है, वो स्लाइस मैंने सिर्फ कंसेप्चुअली किया था. So now the internal force V is the internal force. Remember, F is the applied force. So V divided by area. Which area? This area. This is what I mean by shear stress. Shear stress, and it's often denoted by tau. ठीक है. So जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका फार्मूला भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, लेकिन एक तो ये है कि ये एरिया उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स होता है, ये होता है पैरेलल टू द फोर्स. दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. Now from this example you might get the impression that it will always be 2V equals F. Yeah? क्योंकि यहाँ पे दो हैं, दो planes हैं, they are called shear planes, but it will not always be the case. For example, यहाँ पे मेरे पास दो scenarios हैं.
एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. Can you tell me what is the difference between these two? So I have this adhesive region, and because this is a rigid support and you apply load here, you want this to slide past this. तो ये जो region है, अब यहाँ पे because you have just one region, one shear plane, so the internal force V will be equal to the external force F. So in this case F equals V क्योंकि ये single shear है. अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास चूंकि support double है and you have this single body, single applied force, and now these two different adhesive contacts, they will give rise to double shear, which means there are two planes. तो अगर आप इसको free body diagram देखें, you will have one internal force due to contact with this side and one internal force due to contact with that side. So वो 2V equals F वाला मामला इसमें भी आ जाएगा. So ये आपको जब प्रॉब्लम दिया जाएगा, you have to be watchful के V equals F कब लगाना है और V equals half F कब लगाना है. ठीक है. I mean ये तो कुछ केसेस में even 3V equals F भी हो सकता है, वो complicated joint हो सकता है, but you need to remember this. So let's wait for this azan to finish and then we continue. Let's pause. So let's resume. अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई ये वाली कि कहाँ पे डबल शेयर होगा, कहाँ पे सिंगल शेयर होगा. Yes, sir. अच्छा, so it should be very straightforward if you look at the diagram. For example, यहाँ पे we have that example again. It was found out in that wire cutter example that the hinge, this was the hinge, yeah, B must support this much force. ठीक है, यहाँ पे force कम था लेकिन उसका impact यहाँ पे बहुत ज़्यादा था because of the lever action. So you imagine 385 Newton force और ये दोनों साइड से है क्योंकि दोनों का consequence उधर आएगा. Now you have a pin here. इस व्यू में आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन if you look at it from the side, ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा, साइड में जब आप इसको देखेंगे तो you will see this pin. Yeah? This is your pin. This is your pin. So 8 millimeter उसका डाया है. And remember, because there are two handles and two jaws, so both will have their parts combined here. तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है. ठीक है कि you have two regions, but इनके दरमियान जो ये जो दो रीजन्स यहाँ पे कंबाइन हुए हैं, ठीक है, ये वाले, इनके दरमियान जो shear plane है, it's still the same. यहाँ पे अगर आपको दो नजर आ रहे हैं तो you had different contacts, yeah? Different planes. लेकिन यहाँ पे in spite of these two regions, the shear plane is the same. देखो ना, पेन का यही जो आपका पेन है ना, उसमें सिर्फ एक सरफेस, एक प्लेन ऐसा है जिसमें one part goes upward and the other part goes downward. So यहाँ पे वो ये डबल shear stress नहीं है, ये single shear stress है. ठीक है. So diameter you know
is 8 millimeter. Determine the pen's shear stress in SI dimensions of megapascal. So how do we start? The first thing we need to find is the shear force, and shear force will be, tell me, कितना होगा? Force. 385. 385. It will be one time. अच्छा, आपको दो दफा इसलिए नजर आ रहा है कि वो दो hinges है ना, सॉरी hinge है कि दो handles है, ठीक है ना, लेकिन इनका ये जो इंटरसेक्शन है ये सेम है. तो as far as the pin is concerned, pin का ये जो प्लेन है इसमें you have these two forces and they have to opposing. अगर नहीं है तो फिर स्ट्रेस ही नहीं होगा ना. अगर यहाँ से एक साइड से हटा दें there will be no shear stress. और एरिया क्या है? एरिया कौन सा होगा इसका? कैसे कैलकुलेट करेंगे? Remember, area has to be parallel to the shear. So pi r square and r is 8 millimeter. Yeah, so pi d square. It's better to use this formula, pi d squared by 4, और d आपका जो है ना 8 मिलीमीटर है. ठीक है, यहाँ पे आपने मिली और ये सारी चीजों का ख्याल रखना है. Now the stress, you need to find stress which is V over A. You plug the values. End पे आपके पास ये आ जाएगा न्यूटन पर millimeter squared. या अब यहाँ पे आपने you need to get rid of milli first. ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मिली निकल जाए, और उसके बाद you need मेगा पास्कल. So you need to make sure to have another factor so that you have, so in this case you need to get rid of millimeter, चूंकि नीचे है तो आपने millimeter ऊपर रखना है, and 1000 millimeter is 1 meter. Yeah, and then square this whole thing, this will be 1. So you get rid of this millimeter and this millimeter. ठीक है, then you need megapascal in the numerator and pascal in the denominator, and that is 10 to 6. Yeah. So this pascal will cancel out with this Newton per square meter and you will be left with megapascal. That is something which you already know, okay, how to do. This is, I think, the last example. And that is you have a threaded rod. You have a threaded rod, this one, and it has to support a load, a tensile load of 350 pounds. And because this whole structure is connected to the support by this pin, तो ये जो पिन है इसको वैसे कहते हैं क्लीवस जॉइंट. ठीक, क्लीवस जॉइंट. The pin, if you look at this free body diagram, this pin will be subjected to shear. और ये अब this is now an example of double shear. क्यों डबल क्यों है यहाँ पे? Although you have a single force here, but there are two planes. एक प्लेन इधर है और एक प्लेन इधर है. So एक प्लेन इधर है, एक प्लेन इधर है. ठीक है. So which means that you will have, for example, if T is 350 pounds, this must equal 2 times V. V is the shear stress, the shear force. So V must equal T over 2, which is 175 pounds. ठीक है. Diameter कितना है? Diameter 3 by 8 inch. Yeah, 3 over 8 inch. So this will give you the area. And the stress, you need to find the shear stress. Tau is T over A. इसमें सिर्फ चैलेंज ये है कि जो आपको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? पाउंड पर स्क्वायर इंच. Square inch. और आपको किस में चाहिए? Don't forget to read the question completely.
in dimensions of SI. KSI. तो आपको KSI न्यूमरेटर में चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए? Because this is equal to PSI, yeah? So यहाँ पे KSI is equal to how many PSIs? 10 to third, yeah? 10 power 3. Now this PSI will cancel out with this whole thing and you will be left with KSI. और ये कैलकुलेशन आपने की हुई है, ठीक? So we are done with today's examples. Next time we will cover a few problems, the end chapter problems. And today, most likely by the end of today, we will also launch an assignment number 2. That assignment will cover this whole chapter. So maybe some of the problems are given as assignments and the remaining problems we will try to cover in the next lecture. So what will be the submission time? Submission तो submission एक हफ्ता हम रख लेंगे, बिल्कुल. ठीक है सर. I'm also thinking about giving you a separate assignment and that will be more about exploration, क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, एल्यूमिनियम स्टील का यूज करना है, ये डिफरेंट टाइप्स मटेरियल्स ना, या उनके जो नाम है. नाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन योर FIP, क्योंकि आपने फाइनल प्रोजेक्ट में जारी बात है कोई ना कोई चीज बनानी होगी, बट दैट इज समथिंग व्हिच you only need to know the jargon, the terminology. तो इस कोर्स में हम उसको ऐसा टाइप कोर्स नहीं बनाना चाहते, so I'll just give that as a reading assignment. You will have to read it and then you have to write it in your own words. अब आपकी मर्जी, आप उसको ऐसे के फॉर्म में लिखते हैं, आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, उसमें फिगर्स डालते हैं. So think of writing a report, ठीक है ना? आप रिपोर्ट राइटिंग आपकी जो है ना प्रैक्टिस में हो जाएगी. उसके हो सकता है उसके लिए डेडलाइन में ज्यादा दे दूं, हो सकता है 10 दिन दे दूं इस तरह. You can ask questions if you have now. We still have some time left. And do read the comments at the end of each example. ठीक है ना? मैं सारे मुझे याद नहीं रहती, इसमें जो वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, उसको आप यू ट्राई टू अप्रिशिएट कि वो वैल्यू कितनी लार्ज है, एंड यू मस्ट हैव अ डे टू डे एग्जांपल, जिससे आप, जिस तरह आपने किसी ने हेयर एग्जांपल दिया था, हेयर थिकनेस का, सो दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स अ लॉट. ठीक है. और आप यहाँ पे ना अभी कमेंट में P भी लिखना है अभी ना, सब ने P लिखना है प्रेजेंट. ये कौन सी लैब थी जो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गई फिर पहले? सर DLD की. अच्छा, DLD की लैब थी. अच्छा, ये यहाँ पे आप प्रेजेंट, यहाँ पे इसमें मीटिंग में बहुत कम लोग आए, या तो बहुत से लोगों को पता नहीं है. अच्छा, और आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं? यहाँ पे तो ये जो कमेंट्स में लिखता हूँ ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ ना. So how do you maintain this discussion? ये आप सिर्फ वीडियो देखते हैं बस? सर जो बेहतर लगता है वो लिख लेते हैं. अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग ये assumption करते हैं कि हम जो है ना बुक में, चूंकि एग्जाम्पल बुक में, एक तो ये सारी चीजें बुक में नहीं होती. हाँ, एक चीज मुझे अभी याद आई है, मैंने शायद नहीं बताई आपको.
वो चूंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिख रहा था ना, तो लेट मी जस्ट डिस्कस इट हियर ऑन अ सेपरेट पेज. कुछ चीजें आपको याद होगी. फॉर एग्जांपल एस आई में हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मेगा. Why does it have to remind me every time that I am presenting? Yeah, I know I'm presenting. ये गूगल की कुछ चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. I mean, why should I know every minute that I am presenting? So, जिस तरह माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये तो आपको पता है एस आई में ये चीजें हम लिखते हैं, ठीक है. इवन अच्छा, सिमिलरली मेगा पास्कल, गीगा पास्कल एंड सो ऑन. लेकिन नॉर्मली आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि माइक्रो इंच, फॉर एग्जांपल, ये कभी देखा है आपने, या मिली इंच? Have you ever seen such something like that? No, sir. It's not very customary. It's बहुत सारे issues आते हैं. But there are still situations where you would like to have a simple unit. For example, if you have 0.001 inch, you would, and this is something which जिस तरह millimeter होता है, इस तरह you would like to have something like milli inch. ठीक है. Now, this particular example has been seen so many times that engineers have come up with a special name. Rather than calling it milli-inch, they just call it mil. ये आपने देखा है मिल? ये आपने सर्किट में भी देखा होगा, MIL, 1 mil. No, sir. ये असल में ये इसलिए है ना कि जो आपके वायर्स होते हैं ना, कंडक्टर, जो कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम, उनका डायमीटर बहुत कम होता है. और अगर आप SI सिस्टम यूज करते हैं फिर तो आप मिलीमीटर वगैरह यूज कर लेंगे. बट इफ यू आर यूजिंग US कस्टमरी सिस्टम, तो US कस्टमरी सिस्टम में ये बार बार ये लिखना 10⁻³ ठीक है ना, -3rd. तो उससे अच्छा ये है कि फिर आपको ये भी नजर आएगा 1 mil. ठीक है. सो 1 mil इज सिंपली 10⁻³ inches. Of course, the other exception for that mega and kilo is that you do use KSI and MPSI. Yeah? Although ये SI का है, लेकिन this is acceptable. ठीक है ना. So that was it for today. See you on Tuesday. और असाइनमेंट आपने खुद करनी है, ठीक है. अभी भी मेरे पास एक चीटिंग केस आए हैं. चीटिंग केसेस में हमारी पॉलिसी बिल्कुल ये होती है कि 0 मार्क्स मिलते हैं. आप जो भी आर्गुमेंट दे दें कि नहीं उसने मुझसे कॉपी की है, कॉपी आपने की हो या आपसे किसी ने की हो, for us it's the same problem because you are part of the problem. If you are part of the problem, you do not deserve any marks. तो बेहतर ये होगा कि आप असाइनमेंट खुद कर ले, ठीक है. उस इसी से आप, क्योंकि असाइनमेंट का मकसद ये है आपकी लर्निंग हो जाए. असाइनमेंट का मकसद ये नहीं है कि आप कॉपी कर लें. ठीक हो गया. So I'm closing the recording now. Stop recording. And that's it for today. Thank you.